Hello students, welcome to this video lecture. Today we will be discussing applications of integration. In integration, today we will be doing the marginal analysis. It means we are going to find out what will be the total cost when marginal cost is given to us. Right? Let us see the first question. The marginal cost function of a firm is given by marginal cost is equal to 3000 e to the power 0.3x plus 50. ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट इतना दिया हुआ है। हमें पता करना है कि फर्म का टोटल कॉस्ट कितना है। हमने डिफरेंशिएशन में क्या किया था, जब हम टोटल कॉस्ट को डिफरेंशिएट करते थे तब हमारा मार्जिनल कॉस्ट आता था, और इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन के ऑपोजिट है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमारा मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है। अगर इस मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन वी विल गेट द कॉस्ट फंक्शन, राइट। इट इज सेइंग वी हैव टू फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द फर्म, so let us now integrate it. Okay, this is the sign of the integration. 3000, this is the function, marginal cost function, 3000 e to the power 0.3x plus 50 with respect to x. Now the integration will be 3000 e to the power 0.3x by 0.3. डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है, राइट, और यहाँ पे ये कोएफिशिएंट जो है वो डिवाइड में हो जाएगा, एंड दिस 50 विल बी 50x प्लस k. k is a constant. This is constant of integration. So our answer is total cost is 10,000 e to the power 0.3x plus 50x plus k. This is our total cost function. But you see here, the value of k is not known to us. This function will become complete when the value of k will be known to us. Then we will get the total cost function. It means our objective is now to calculate the value of k, which is the constant of integration, right? Now let us move to the given information. क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि हमारा फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, 80,000 है। आप लोगों ने पढ़ा है कि जब कोई भी फर्म 0 यूनिट्स आउटपुट प्रोड्यूस करती है, ठीक है, उसमें हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी 0 होता है, राइट, और टोटल कॉस्ट जो होता है वो फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होता है, because variable cost is directly proportional to the number of units produced. इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप यूनिट्स प्रोड्यूस करते जाओगे वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट आपका बढ़ता जाएगा, और अगर आपके पास 0 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है तो इसका मतलब ये है कि वेरिएबल कॉस्ट भी आपका 0 है। जो टोटल कॉस्ट का में जो कंपोनेंट होगा, इसका मतलब टोटल कॉस्ट जो है फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर हो जाएगा, राइट। फिक्स्ड कॉस्ट हमारा दिया हुआ 80,000, तो टोटल कॉस्ट हमारा 80,000 हो जाएगा जब x इज इक्वल टू 0। हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो हमारा टोटल कॉस्ट 80,000 हुआ, 10,000 e to the power 0.3x plus 50x plus k. हम 0 यूनिट्स के लिए वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने 0 पुट किया, यहाँ पे भी हमने 0 पुट किया, ठीक है। ये सारा कुछ हमारा क्या आया, दिस बिकम्स माई e to the power 0, that becomes my 1, right. This is my 10,000 as it is, this becomes my 0, this is my k. So 80,000 minus this 10,000, we get the value that is 70,000. We got the value of k, right. So total cost function of the firm, now you put the value, substitute karo isko. C is equal to 10,000 e to the power 0.3x plus 50x plus 70,000, right. Okay. Assume that marginal cost in lakh of rupees is given by marginal cost is equal to 4 plus 5x square plus 3 by 2 e to the power minus x. ये हमारा marginal cost function दिया हुआ है, और
क्या पता करना है, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमें टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता करना है कब, जब हमारा x यूनिट्स दिया हुआ है, जब वो 2 है और इस क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, 6 लाख है, राइट। दिस इज कम इन 1992 बीकॉम ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी। मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट फंक्शन आएगा, ठीक है। हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन को, तो ये 4 हमारा क्या बन जाएगा, 4x हो जाएगा। 5x स्क्वायर जो है ये होगा 5x 2 + 1 बाई 2 + 1। ये हमारा हो जाएगा -3/2 e टू द पावर -x। माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट -1 है, जो जब बाद में जा करके ये क्या होता है -1, 2 × -1 प्लस ये हमारा k हो गया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। ये हमारा 4x हो गया। दिस विल बी 5x³ / 3 -3/2 e टू द पावर -x प्लस k। टोटल कॉस्ट फंक्शन में हमारा एक k का वैल्यू है जो हमें निकालना पड़ेगा। k का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट हमारा दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट हमारा कितना होता है, फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होता है जब हम x = 0 यूनिट्स ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 6 लाख। सो हम जहाँ भी x है हम वहाँ पे 0 का वैल्यू डालेंगे, 0 to the power 3/3 minus 3/2 e to the power -0 plus k. This is 6. This becomes my e to the power this is -0, right? So this becomes my -3/2 plus k, right? So this is k का वैल्यू हम निकाल लेंगे, 6 + 3/2 that comes out to be 15/2। ये 15/2 हमारी वैल्यू आ गई। अब हमें ये पता करना टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब x 2 यूनिट्स है। k का वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, 4x + 5x to the power 3/3 - 3/2 e to the power -x plus k हो गया। k का वैल्यू जो आया था हमने यहाँ पे डाला और जहाँ पर भी x है हम वहाँ पे 2 डाल रहे हैं, ठीक है, राइट। ये 8 हो गया, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 40/3 आएगा। This will be -3/2 e to the power -2 plus 15/2, right? So that the answer comes out to be 73/6 - 3/2 e to the power -2. Okay, so this is our answer, right? The marginal cost of a function of a firm is MC is equal to log x whole square। कि मार्जिनल कॉस्ट दिया हुआ है, हमें क्या पता करना है, टोटल कॉस्ट ऑफ 100 यूनिट्स if the cost of producing 1 unit is ₹22। this is the information given to us। मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन का दिया हुआ है, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू log x whole square, total cost, final total cost of 100 units if cost of producing 1 unit is 22, right? इस क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है, इसका इंटीग्रेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इंटीग्रेशन ऑफ log x whole square, राइट। सो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट को इंटीग्रेट करेंगे। दिस इज माय टोटल कॉस्ट, इंटीग्रेशन ऑफ log x whole square है, right? Now you have to consider here there is 1 over here, this can also be written in this way, we integrate with respect to x। now you consider this is u and you consider this is v, we'll apply this formula, integration of uv, okay? So what is the formula, you take out u, you integrate v first with respect to x। now this is minus whole integration, you open the bracket, now what you do, you differentiate u, the first term, into, now the second term you integrate it, this is whole integration, and then this is dx again,
इसका मतलब ये है कि आप सबसे पहले u जैसे है वैसे ही लिख रहे हो, v को इंटीग्रेट कर रहे हो, फिर आप क्या कर रहे हो, u को डिफरेंशिएट कर रहे हो, ठीक है, फिर v को इंटीग्रेट कर रहे हो, इसका जो वैल्यू आएगा ब्रैकेट के अंदर उसको आप फिर से एक इंटीग्रेट कर रहे हो, ठीक है। दिस यू हैव टू रिमेम्बर। लेट अस सी दिस नाउ। ये u है हमारा, ये v है हमारा। u log x होल स्क्वायर जैसे है वैसे ही लिखा, हम 1 को इंटीग्रेट कर रहे हैं, माइनस साइन डाला, ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन, और हम फिर से u को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, log x होल स्क्वायर। फिर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हम 1 को सेकेंड टर्म को इंटीग्रेट कर रहे हैं और ब्रैकेट्स को बंद करके, राइट। और आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको फिर से आपको इंटीग्रेट करना है, क्योंकि आगे में एक इंटीग्रेशन का साइन है, ठीक है। नाउ ये log x होल स्क्वायर जैसे वैसे ही रहेगा, ये 1 का x हो जाएगा, माइनस ये हमारा log x होल स्क्वायर है, राइट। सो दिस विल बी डिफरेंशिएटेड, so this will be 2 log x by x, right, and you again integrate this, so this is x, you cancel, and this is whole, again you have to integrate this, you cancel this, you cancel this, right, we are left with 2 log x, you have to integrate this, so this is, you wrote this as x into log x whole square, minus you have to integrate this part now. So this is x into log x whole square. Take out 2 outside the bracket, right? Then you have to integrate log x again. Log x you have to integrate. You will apply the same formula again over here. You have to assume there is a 1 over here. Again you will apply u into v over here, right? X into log x whole square minus 2. Then you integrate, see over here, right? log x को बाहर रखा आपने, 1 को इंटीग्रेट किया तो ये x आ गया, ठीक है। और अंदर में फिर से आप क्या कर रहे हो, log u को डिफरेंशिएट करना है, मतलब log x को, तो ये 1 by x हो गया, और 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो x हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो विल बी लेफ्ट विद, ये 1 है यहाँ पे, 1 बच गया यहाँ पे, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये x बचेगा, विल बी लेफ्ट विद द रिजल्ट x into log x minus 1. So this is what I have written over here, and plus c. So what is the result? X into log x whole square minus 2x log x plus 2x minus minus, ये plus बन गया, ठीक है, plus c. This is not in the bracket. This is constant of integration. Now your question, यहाँ तक हमने इंटीग्रेशन कर लिया, हमने टोटल कॉस्ट फंक्शन को निकाल लिया। ये इंटीग्रेशन ही आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये आपको इंटीग्रेट करना आना चाहिए अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो, राइट। अब आपको दिया हुआ है कि 22 रुपीज यूनिट्स है, कॉस्ट है, और 22 रुपीज कॉस्ट है एक यूनिट को प्रोड्यूस करने का, राइट। तो हम 22 इज इक्वल टू जो हमारा टोटल कॉस्ट फंक्शन आया, ठीक है, दिस इज आवर टोटल कॉस्ट फंक्शन, राइट। और एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए है तो हम यहाँ पे 1 डालेंगे, सो दिस बिकम्स log 1 होल स्क्वायर माइनस 2x है, 2 into 1 करेंगे, log x log 1 2x, तो ये 2 हो गया, प्लस c। आपको ये याद रखना है कि log 1 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको 22, ये क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा हमारा 2 into log 1, so this also becomes 0, this is 2 plus c, so 22 plus 2 plus c, तो c का वैल्यू जो आया हमारा 20 आया, राइट। ये हमारा टोटल कॉस्ट निकला। एक इंफॉर्मेशन दी हुई थी आपको, हमारा इससे हमारा c का वैल्यू निकल गया, और यू कैन से k का वैल्यू निकल गया, दैट इज 20। अब वी हैव गॉट दिस वैल्यू 20,
Now we need to put this formula, put this value when x is equal to 100 units, right? So again ये इक्वेशन आपको पहले ही मिला था. आप इस इक्वेशन में x की वैल्यू 100 पुट करते जाओगे. 100 log 100 स्क्वायर 2x से 2 इंटू 100 हो जाएगा. log x log 100 हो गया प्लस 2 इंटू 100 200 c का वैल्यू 20 जो आया हमारे पास. ये हो जाएगा 100 log इंटू 100 log 100 इंटू log 100 स्क्वायर माइनस 200 log 100 प्लस 220. log 100 की वैल्यू है 4.60 whole square, right? Then this is 200 into log 100 again 4.60 plus 220. When you simplify this, you will get 2336 minus 920 is equal to 1416. This is natural law. You have to remember this. Marginal revenue function is given to us, and it is given to us as AB by x minus b whole square minus c. You have to prove that the demand law is P is equal to A by B minus x minus c. आपको ये प्रूव करना है. क्वेश्चन आया हुआ है DU BCom Honors 1986-2006 SOL. हम इस मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू फंक्शन आ जाएगा, राइट? Just integrate this marginal revenue function AB by x minus b whole square minus c. अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो you will get minus AB by x minus b minus cx plus k, right? Now रेवेन्यू जो है जीरो होगा जब आप x आपका जीरो है. जब आप कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो तो आपका रेवेन्यू जीरो है. तो ये जो रेवेन्यू फंक्शन आया हमारे पास, उसको हम जीरो पुट करके हम k की वैल्यू निकाल लेंगे, राइट? You put x is equal to 0 into this function. So what will you get? You will be left with minus a b by minus b, and you get the value of k is equal to minus a, right? Now you have this revenue function जो हमने निकाला. Revenue is equal to minus ab by x minus b minus cx plus k, right? Now you know revenue is equal to price into number of quantities sold, right? You have got the value of k. K is minus a. You put this. This is what you will get. Minus ab by x minus b minus cx minus a. P है, आपको ये प्रूव करना है P is equal to a by b minus x minus c. x को आप इधर you will bring this side, so the result you will get is minus ab by x into x minus b minus c minus a by x, right? Now you will take out the LCM. Since minus c यहाँ पे एकदम सेपरेट है, हमने इसको माइनस से अलग कर लिया. जो बचा है रिमेनिंग हम उसका LCM निकाल लेते हैं. You will get over here minus ab minus ax plus ab. You cancel this. You will be left with minus a by x minus b minus c, right? Now this is all in positive, a by b minus x, so you can write this as this way also, a by b minus x minus c, right?
In this question, you are given marginal cost and marginal revenue. Marginal cost is 20 plus x by 20. Marginal revenue is equal to 30. Fixed cost rupees 200. You have to determine the maximum profit and the number of items produced for this profit. क्वेश्चन में मार्जिनल कॉस्ट दिया हुआ है, मार्जिनल रेवेन्यू दिया हुआ है, फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है और आपको क्या करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है. यू नो मार्जिनल कॉस्ट, जब हम टोटल कॉस्ट को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट आता है. दिस इज ऑल्सो इक्वल टू डेल्टा सी बाई डेल्टा एक्स. सो दिस इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स बाई 20. उसी तरह रेवेन्यू डेल्टा आर बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 30. सिमिलरली डेल्टा पी बाई डेल्टा एक्स क्या होगा, change in profit with respect to x. This can be mr minus mc, right? So this will be 30 minus 20 minus x by 20. That comes out to be 10 minus x by 20. This is not your total profit, right? Now we have to get the profit function. So if we want to get the profit function, we need to integrate delta p by delta x. So we integrate it and we get the total profit. When we integrate this, we get 10x minus x squared by 40 plus k. This is constant of integration. Now our objective is to find the value of k. Given us is fixed cost 200 रुपए. इसका मतलब ये है कि जब हमारा कुछ भी क्वांटिटी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, when x is equal to 0, so profit is minus 200. That is minus whatever the amount is of fixed cost, right? So k का वैल्यू हमारा क्या आया, minus 200. अब इस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, दो नेसेसरी कंडीशन है आपके पास जो फुलफिल होना चाहिए. एक तो डेल्टा पी बाई डेल्टा एक्स 0 पुट करना पड़ेगा आपको, जहाँ पे आपको x की वैल्यू निकल जाएगी, और ये प्रूव करना है आपको इसका सेकंड डेरिवेटिव, second order derivative delta square p by delta x square is less than 0, right? Let us come to the first condition. Delta p by delta x is equal to 0. Delta p by delta x ये है हमारा, इसको हम 0 पुट करेंगे तो हमारा x का वैल्यू 200 आएगा. Delta square p by delta x square, if we differentiate it, right, we will get minus 1 by 20, which is less than 0. Fine. So at x is equal to 200, our profit is maximum because this condition is proved. Now we find the maximum profit. We put the value into the profit function that we got after differentiating delta p by delta x, right? This one, यहाँ पे हम x का value put करेंगे, okay? k का value हमें पता है, हमने निकाला है. x हमारा 200 आया, ठीक है, k हमारा minus 200 था, we get as rupees 800, right? Now you see, you can say यहाँ पे हमने टोटल प्रॉफिट निकाला है, टोटल प्रॉफिट, उसके बाद हमने कंडीशंस लगाया है, क्या डेल्टा p by delta x is equal to 0 and delta square p by delta x square is less than 0. You can say this is total cost and total revenue approach. Note, you can also find maximum profit that avoids using the concept of maxima and minimum. It uses the fact that maximum profit is obtained when marginal revenue is equal to marginal cost. So the maximum profit will be given जब आप MR और MC को इंटीग्रेट करोगे, ये हो जाएगा आपका MR MC approach. We'll solve by this method in the next question. We come to this question where our marginal revenue is given to us. Marginal revenue is 20x minus 2x square. Marginal cost भी दिया हुआ है 81 minus 16x plus x square. आपको क्या निकालना है? Profit maximizing output and the total profit at the optimum level. X निकालेंगे, वो हमारा optimum level होगा,
और हमारा फिक्स्ड कॉस्ट ये मान के चलना है कि वो 0 है। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका 2000 से 2010 DU बीकॉम ऑनर्स में। मार्जिनल रेवेन्यू आपका 20x माइनस 2x स्क्वायर है। मार्जिनल कॉस्ट आपका ये है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट के लिए हमने पहले क्वेश्चन में देखा we have a condition marginal revenue is equal to marginal cost and the second condition की जो first order derivative है marginal revenue का with respect to x वो कम होना चाहिए, वो first order derivative marginal cost से with respect to x, right? हमें ये दो conditions दिए हुए हैं, right? Now let us equalize MR is equal to MC। हमने क्या किया 20x minus 2x square is equal to 81 minus 16x plus x square। जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट है ये हमारा मार्जिन, हमने इसको बराबर कर दिया। हम इससे x की वैल्यू निकालेंगे, ये 20x हो गया माइनस 16x है, इधर हमने प्लस कर दिया माइनस 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हम इधर ले आए, इसको माइनस हो गया ये, और माइनस 81 दिस इज इक्वल टू 0। इसको हमने 0 के बराबर कर दिया। Now what we get is a quadratic equation। इन दोनों को प्लस किया 36x आया, इन दोनों को माइनस 3x स्क्वायर आया माइनस 81 is equal to 0। You see this is a form of a quadratic equation, we need to solve this। Here is the portion where I have solved this equation and we get the values as x is equal to 3 और 9। हमारे पास दो वैल्यूज आए, x is equal to 3 और x is equal to 9, right? ठीक है, we got the values by equating these। Now let us get this and then we'll get this, right? हमने इसको डिफरेंशिएट किया, तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो हमें मिलता है 20 माइनस 4x। मार्जिनल कॉस्ट को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास बचेगा माइनस 16 प्लस 2x। ये यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शन, राइट? अब आपको देखना है क्या 3 पर ये कंडीशन सेकंड कंडीशन फुलफिल हो रहा है या 9 पे ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तो हम चेक करते हैं 3 की वैल्यूज डाल करके इसमें, राइट? 20 माइनस 4 इंटू 3 ये हमारा आता है 20 माइनस 12 8 आ गया। अब यहाँ पर हम पुट करते हैं तो ये हमारा हो गया माइनस 16 प्लस 2x, तो ये हो गया 2 इंटू 3, ये हमारा हो गया माइनस 10। मगर आप देख रहे हो कि मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा है, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट है, तो हम x की वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है मार्जिनल रेवेन्यू को वो कम मानना चाहिए। फिर हम x इज इक्वल टू 9 पे चेक करेंगे, तो हम 9 वैल्यू पुट करेंगे x की जगह पर, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 4 इंटू 9 वी गेट एज माइनस, वी गेट दिस इज माइनस 16। 20 माइनस 36 इज इक्वल टू माइनस 16। मार्जिनल कॉस्ट में भी यही काम करेंगे, हमें मिलेगा 2 इसकी वैल्यू। तो आप देख सकते हो कि द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो हमारा कम है, तो हमारा ये वाला कंडीशन फुलफिल हो गया। अब हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। हमें पिछले स्लाइड में देखा कि मैक्सिमम प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा मार्जिनल रेवेन्यू माइनस मार्जिनल कॉस्ट का डिफरेंस को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एक बार आपको 0 वैल्यू पुट करना है और एक बार आपको 9 वैल्यू पुट करना है। सो व्हाट इज द डिफरेंस? You write the difference over here 20x minus 2x square minus 81 plus 16 minus x square. What you will get? Right? This is 20x, this is 16x. तो ये बन गया मेरा 36x. Minus 2x square, this is minus x square. ये बन गया minus 3x square. Right? माइनस 81 जो यहाँ पर है ये माइनस 81, इसको आप प्रॉफिट नाउ यू नीड, आप इसको इंटीग्रेट करोगे, यू विल गेट द वैल्यू एज माइनस एक्स क्यूब प्लस 18x स्क्वायर माइनस 81x। ये माइनस 81x बन जाएगा, ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई 2, आप कैंसिल करोगे तो ये 18 हो जाएगा x स्क्वायर। सिमिलरली दिस वन रूल अप्लाई करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। नाउ अगर हम 9 वैल्यू पुट करते हैं
ठीक है, हर जगह पे अगर 0 पुट करते तो वो 0 ही आएगा, एंड इफ यू पुट 9 वी गेट दिस एज वैल्यू, राइट, एंड देन दिस minus 0. So this is profit is positive, so we have taken a mod absolute value, so 1134 is the answer. Here we find the maximum profit over time if marginal revenue and marginal cost are given as functions of time. You have to remember we are finding the maximum profit over time. Agar marginal revenue and marginal cost are given as functions of time. Let us introduce the concept. In many business operations such as oil drilling, mining, and other depletion operations, initial revenue is generally higher than revenue after some period of time has passed. This is known as revenue rate, and revenue rate as a function of time we see here is a decreasing function. Why? Because initial revenue is generally higher, later after some period of time revenue starts declining. So revenue rate as a function of time is a decreasing function. However, the cost rate of such operations generally increases with time because of inflation and other reasons. That is, cost rate as a function of time is an increasing function. We see revenue rate as a function of time is a decreasing function, and cost rate as a function of time is an increasing function. So what is the issue over here? The problem is of determining the time t star that maximizes the profit function, which is also a function of time. Right? How do we solve these problems? Now we denote the revenue and cost function as it's a function of time, that is RT and CT respectively, where T denotes time. Now the derivatives R hash T and C hash T with respect to time represent revenue and cost as time rates. What are the assumptions? That revenue rate in the beginning is greater than the cost rate, and as time passes by, revenue, since it is a decreasing function, revenue rate is less than the cost rate. Now, optimum time at which the business operation should continue is the point of time t star when this R hash T is equal to C hash T. Maximum profit will be obtained when T is equal to T star, right? And the profit is P T star is equal to integration of 0 to T star, right? R hash T minus C hash T with respect to time. This is the concept. Now we'll solve a question on this. This is our question. The revenue and cost rate of an oil company are R hash T as a function of time is 9 minus T to the power 1 by 3, and C hash T as a function of time is 1 plus 3 T to the power 1 by 3, where T is measured in years and R and C are measured in millions of rupees. Revenue cost millions in rupees में measure किया जा रहा है. आपको क्या निकालना है? Determine how long the operation should continue and the profit that can be generated during this period. Optimum time T star जो है वो हमें पता है वो कैसे निकलेगा जब हम revenue which is given as a function of time और cost which is given as a function of time उसको हम equalize कर देते हैं. ठीक है? Now 9 minus T to the power 1 by 3 is equal to 1 plus 3T to the power 1 by 3. So this is 8 is equal to 4T 1 by 3, or you can write T 1 by 3 is equal to 2. Right? So T is equal to 8 years. You get the value? T is equal to 8 years. Now profit जो आपको निकालना है which is as a function of time can be generated during this period. Maximum profit वो आपको RT minus CT को differentiate करना है आपको with respect to T. Now if you differentiate it, you
put the values over here, whatever is given in a question RT, 9 minus this and CT, 1 plus 3t to the power 1 by 3 with respect to dt. Right, open the brackets, you get 9 minus t to the power 1 by 3 minus 1 minus 3t to the power 1 by 3. So this becomes 8, this is minus 4t 1 by 3. So you differentiate it now, you get 8t minus 3t to the power 4 by 3. If you put the value 8 over here, this will be 8 into 8 minus 3 into 8 to the power 4 by 3, and if you put the value 0, that will be 0. This is 64 minus 3 into 2 to the power 4. This will be 64 minus 3 into 16, that is 48. So this comes 16 million rupees. You have to solve this question in this way, right?